right, so it was off. So hi, good evening everyone. Welcome to Gradeup, India's largest e-learning platform. My name is Joshit Singh and I welcome you all on this platform. I hope the sound is clear now. Please let me know if there is sound proper or not. Okay, so please let me know if my sound is clear or not and I'm visible to you or not. Okay. So hi, good evening Shubham, कैसे हो आप? Suresh, yesterday you told one thing that engineering batch start free and means, but there is okay. Suresh, I told that it will begin. Okay, it will begin soon as it will be live, as soon as it will be there, you will get notified. अभी launch हुआ नहीं है, होने वाला है. It will take some days. Okay, I think 1 or 2 days. All right, and that's it. Okay. So hi, I welcome you again. All right, so just do one thing. As soon as you are joining the stream, please like the video, share the video, as well as subscribe this channel. Okay, so as I always say, as I always tell you, that what is the very first thing for which we all are concerned right now? क्या है सबसे important चीज आज के time? The most important thing is how to wash your hands properly. हाथ धोने हैं अपने बहुत बहुत अच्छी तरीके से, और ये these are the guidelines given by WHO. तो समझ जाओ that how much serious these things are now. ठीक है, so you just have to wash your hands properly. These are the certain steps what you have to take care now. You have to wash these portion of your hands as well. You have to wash your thumbs, your finger, your fingernails. All right, so these type of things you have to take care. Shubham, I'm good. So how are you doing? I'm doing perfectly fine. Thank you so much for asking. Hi Rishabh. Hello SK4. कैसे हो आप? All right. So I have given this personally I have given this plan, right, to all the students who have texted me or sent me an email or texted me on Instagram. There is a plan, right, which I have shared with everyone. Okay, so if you wish, you can also ask me that on any Instagram or any social media account. Then this is a number, national number. On this number, if you will call, you can get any kind of information regarding coronavirus, because so many rumors are going on, so many fake news is around the corner going on. So you have to take care of this one thing. You are not going to forward any kind of fake news, right? So please take care of that if you think there is anything. Okay, clear? All set. So I hope you can see. Just please let me know if my sound is all right now or not. Sound ठीक है कि नहीं? Can you see the PPT? All right. So in today's class, let's see. Perfectly fine, sound is fine, PPT isn't working. That's the thing I'm talking about. Okay, I hope it is working now. Let me just give me a moment. All right, so this is not coming, right? The full thing is not coming. Okay, so don't worry, we are going to see just like this only. All right, so let's do one thing. Let me just introduce myself. So my name is Joshit Singh and I have 2 years of teaching experience. I have done my M.Tech from IIT Roorkee and multiple times GATE qualified. Area of expertise are transportation, engineering, fluid mechanics, irrigation engineering and environmental engineering. So these are the things. So the next thing is I have given this question, right? I have given this question to you all. So I hope इसका आंसर निकाल लिया होगा आपने. Can you please share the answers with me for this particular question? आंसर क्या है आपका, आप मुझे बता सकते हैं? So this is the question of setback distance. So setback distance का question है ये, right? तो please let me know if please tell me. So setback distance question is this, right? So what are the things given in this question? The following data are related to horizontal curved portion of a 2-lane highway. Lane are 2 lane, right?
and length of curve is 200 meter, radius of curve is 300 meter, width of pavement is 7.5 meter. In order to provide a stopping side distance of 80 meter, the setback distance required from center line of inner of the pavement is, right? So the very first thing which you need here is what? You need to get the value of extra widening, right? Because what I know is, I know there is a 2-lane road, and what is the width of pavement? Width of pavement is 7.5. So 7.5 is the only width. I have to get the value of width of extra widening also. Why? Because whenever we have a curve, always we are going to have a extra widening on that particular portion. ठीक है? Okay, so I don't think इसमें ज़्यादा problem होना चाहिए. I have given you the whole concept of setback distance also. All right. Perfect. Chalo. Or just do one thing. Please solve this question for me. I give you. It's 9:36, right? So just take 2 minutes and solve this question for me. Take 2 minutes and solve this question for me. Come on. Let's see who will give me the answer first. पहले आंसर कौन देगा ये देखते हैं. एंड उसके साथ ही आप फटाफट से आंसर दो. एंड लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन देता है. ऑलराइट, आंसर्स प्लीज क्विकली कम ऑन. देखते हैं वैल्यूज जो दी गई हैं यहाँ पे, क्या क्या दी गई हैं. ओके, तो अब आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी. यस, परफेक्ट, अभी दिख रहा है, राइट. सो एक्चुअली इसलिए मैंने 2 मिनट लिए थे ताकि मैं एरर को सही कर सकूं, जो टेक्निकल इशू था. द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू कर्व्ड हेयर एंड, ठीक है. तो नंबर ऑफ लेन हेयर कितना है? नंबर ऑफ लेन इज 2. लेंथ ऑफ कर्व इज गिवन एज हाउ मच? 200. परफेक्ट. और क्या दिया गया है? रेडियस ऑफ कर्व इज ऑल्सो गिवन एज 300 मीटर्स and stopping side distance is given as 8 meters. So as you can see clearly here, what you can see that LC is length of curve is more than your side distance, right? Because it is 80 and that is 200. So very simple formula we have to use. क्या करना होगा इसमें? जो the concept that I have discussed with you, what you have to do, since it is a 2-lane road, right? So we have to use M is equals to R minus D 1 minus cos alpha by 2. So 2-3 things we need. Okay, 2-3 things we need, right? The very first thing is we need the value of this D. We need the value of alpha by 2, right? So alpha by 2, how you can get the value of alpha by 2? So alpha by 2 is equals to S by 2R. This is in radian and I have to convert it into degree. So 180 by pi, 180 by pi. ठीक है. R value will come here, R minus D. And D, how you will get D? So W plus WE is equals to 4D. And from here we can say that W plus WE is divided, if you divide it by 4, you will get the answer, right? Hi Nani, good evening. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या? अब इसमें क्या नहीं है हमारे पास? We don't have the value of extra widening. So extra widening can be determined by NL square by 2R plus capital V 9.5 under root R. L value we don't know, right? But L value is what? L value if not given, take 6. N value we know it is 2. 2 तो पता ही है क्या होता है. And R is how much? 300, right? So 300 हो गया R. यहाँ पे भी 300 हो गया R. Okay, right? And as you can see here, do we have the value of velocity? We don't have value. ठीक है. 36 point. Hi Abhinav sir, कैसे हैं आप? ठीक है. So these are the things with the help of which you can get the answer, right? बस इसके ज़्यादा, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए आपको. Perfect. चलो. So today's topic is vertical alignment here. So if you talk about vertical alignment, so what is vertical alignment? We have to see that. Suppose we have a road here. Simply it was going like this, and if this is the ground level, this road will have a gradient something like this. Okay, it is just an example. So when you have curve on a vertical curve, whenever you have a vertical curve, or you can say alignment mein, that time we are going to deal with this. Okay, so this is your gradient right here, so say theta. Okay, this is your gradient here. Okay, and if you have a curve on a horizontal plane, you already know that. ठीक है. Ishadul, hello everyone, this is my first class.
Hi, I welcome you in this class. Okay. So gradient, it is the rate of rise or fall. जैसे कि आपने देखा rise or fall along the length of the road. Along the length क्यों? This is the length of the road. So along this length is only right. If it is not given, don't consider it. Okay, just get the value of mechanical widening. राइट सो अलॉन्ग द लेंथ जो भी आपका राइज या फॉल होगा ओके लेंथ ऑफ रोड में उसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल दिस इज हॉरिजॉन्टल ओके दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन 1 in x कह लो या फिर 1 in n कह लो राइट योर विश जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कह सकते हो उसको ओके then we have there are basically four type of gradients: the ruling gradient, limiting gradient, exceptional gradient or exception gradient, and the minimum gradient, right? So one by one we will look into them. The very first one is the ruling gradient. So what is ruling gradient? We have to see that, okay? And please do not forget to like the video, okay? If you think I'm helping you in any manner, you can like the video, okay? So ruling gradient it is a maximum gradient within which this should be here. ठीक है, थोड़ा सा grammatical mistake है. It is a maximum gradient within which a designer wants to design the vertical profile of a road. So basically vertical profile is what? Vertical curve जो दिया जाता है. It could be a valley curve, it could be a summit curve. Summit curve we are going to see after this gradient classification. Okay, क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें बताई जाएंगी आपको. राइट तो अभी तक इतना इंपॉर्टेंट था. सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन स्पीड. इधर लिखा हुआ है टोपोग्राफी, जो भी टोपोग्राफी होगी उस एरिया की. पुलिंग पावर ऑफ द व्हीकल विल ऑल्सो डिसाइड दिस, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स 1 2 3 एंड राइट परफेक्ट. एंड रूलिंग ग्रेडियंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ योर कैम्बर. ठीक है, याद कर लो. So this is ruling gradient. Then let's move to limiting gradient. Now it is steeper than ruling gradient. First thing, all right, it is steeper than ruling gradient. It is provided only when cost of construction. So the very first preference for any designer for a vertical curve will be a ruling gradient. ठीक है, अगर ruling gradient थोड़ा महंगा पड़ रहा है, when cost of construction for ruling gradient is very high, in that case we will move to limiting gradient. And what is the property or what is the comparison between limiting and ruling gradient? Limiting gradient is steeper than ruling gradient. ठीक है, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में. उसके बाद आता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट. नाउ एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या है? इट इज स्टीपर देन लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड इज प्रोवाइडेड इन एक्सेप्शनल केसेस. तो इसका जो नाम है वही इसको जस्टिफाई कर रहा है. कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही इसको प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, इसको फॉलो किया जाएगा एक वर्टिकल प्रोफाइल देने के लिए. ऑलराइट, और इसका क्या रिलेशन है बाकी ग्रेडियंट से? सो दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट इज मोर स्टीपर, और स्टीपर इज इनफ, यू डोंट हैव टू से मोर, स्टीपर इनफ, ओके, देन द लिमिटिंग ग्रेडियंट. सो दिस इज स्टीपर देन लिमिटिंग ग्रेडियंट, एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट वॉट स्टीपर देन ruling gradient. All right. Also there is one more point that you have to remember. It should not be provided for a road stretch of road more than 100 meter. ठीक है, it should not be provided for a stretch of road more than 100 meter. ठीक है, ज़्यादा अगर 100 मीटर से लंबा स्ट्रेच है उस पर यहाँ नहीं देना है. You will have to provide it, not like limit is 100 meter. 100 meter के stretch तक ही you can provide exceptional gradient. ठीक है, समझ आया? If anyone have any doubt, you can ask me right now. We have seen what the very first thing is ruling gradient. Ruling gradient जो होता है बता चुका हूँ. And limiting gradient is steeper than this, and then exceptional gradient is steeper than this. तो ये अभी तक की कहानी है. समझ आया तो बताइए, प्रॉब्लम है तो पूछिए. ऑलराइट, आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब ये टर्मिनोलॉजी जो है, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कमिंग सून. ओके, अंडरस्टूड, बहुत अच्छे. चलिए आगे बढ़ते हैं. मौसम भी अच्छा है आज तो.
Okay, minimum gradient. Now the last thing. Firstly, why we are providing minimum gradient? क्या हमें make sure करना है? What we have to make sure that's why we are providing minimum gradient, because हर चीज का एक purpose होता है, alright, जीने का भी एक purpose है हमारे. So for that minimum gradient, if you will see, it is provided to ensure surface drainage. ठीक है, it is provided to ensure surface drainage. So this is the purpose of minimum gradient. So minimum gradient we have to provide along the length of the road. ठीक है, along the length of the road we have to provide the minimum gradient. किस लिए? Why? To ensure surface drainage. All set. Now we have values also. Minimum gradient for cement concrete is how much? 1 in 500. I hope you don't have any doubt in 1 in 500 ki what is the significance, because in most of the classes I have already explained it कि 1 in n का significance क्या होता है. 1 in n का significance क्या होता है, I have explained it. ठीक है, still अगर डाउट तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं. ठीक है, ऐसा मत सोचना बता दिया तो फिर से नहीं बताऊंगा. Alright, so minimum gradient for cement concrete के लिए होता है 1 in 500. For inferior quality road it is 1 in 200, and for कच्चा और earthen road it is 1 in 100. So please remember these values. अगर ये कभी आ गया डायरेक्टली तो आप आसानी से कर सकते हो. Okay, no doubt about it. ठीक है, very good, very good. So अगर हम summarize करें इन सब चीज़ों को, so what we can say if we summarize these things, the very first is your ruling gradient. If you are not able to provide the ruling gradient for your vertical profile, then what you will choose? You will choose the limiting gradient, and limiting gradient is steeper than ruling gradient. If it is also not possible, in that case you will take exception gradient, right? And it is steeper than limiting gradient. Okay, so this is the thing. And minimum gradient क्या है? It has to be provided on any kind of road so that we can have a proper surface drainage. And value of that gradient is what? 1 in 500 for cement concrete. Inferior quality के लिए 1 in 100 है, और इसके लिए इतना. So if you will see here properly, तो यहाँ पे भी आप देखोगे जितनी अच्छी रोड है, alright, better the road, lesser is the minimum gradient value. ठीक है, it is not that much steeper. This is steeper than this, and this is steeper than this. ठीक है, I hope इसमें कोई डाउट ना. अच्छा, एक बात बताओ मुझे, suppose A is 1 in 200 and B is 1 in 300. Which one of them is steeper? फटाफट से बताओ, which one of them is steeper? कौन बताएगा? देखते हैं फटाफट से. 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगना चाहिए इसमें, जितना टाइम लगेगा टाइप करने में लगेगा. ओके, आई डोंट वांट यू टू टेक टाइम इन दिस थिंग. ओके, प्लीज टेल मी which one of them is steeper, A or B? A or B? Sub, please, everyone, each one of you, please give me the answer. ठीक है, yes, perfect. So each one of you is very familiar and very good and sound with this concept of 1 in 100 or 1 in 200 or 1 in n, if we talk in more general form. Very good, perfect. सबने सही आंसर दिया, very well done. ठीक है, so A is steeper. If you will see here, it is also clear now, right? Let's move to the next concept. Now comes the important concept of grade compensation. So till now we have seen horizontal alignment. Horizontal alignment देख लिया है हमने, ठीक है, पिछले 3 क्लास से horizontal alignment ही देख रहे थे. Vertical alignment का जितना भी portion था थोड़ा बोड़ा, वो we have done it, right? We have done it. So now just imagine there is a road, all right, where you have both the alignment, both the curve, horizontal also and vertical also. Okay, suppose if I try to show you with the help of a diagram,
आई एम जस्ट ट्राइंग, ठीक है, गिविंग माई बेस्ट. सो दिस वॉज माई रोड गोइंग स्ट्रेट. Alright, this is your ground surface level. Alright, okay, so this road, basically what is happening here, this road having a curve also, a horizontal curve also, and gradient also. Okay, alright, I hope I'm able to show you. Okay, so this particular road have gradient also, and along with gradient, if this is the surface, this is the ground surface, so along with gradient it also have a curve. Along the gradient it also have a curve. So both the things are here, horizontal curve is also there and gradient is also there. So whenever this type of condition will occur, what you have to do, you have to give a grade compensation. You have to compensate your gradient value. जो भी वहां पे gradient value होगी वो आपको compensate करनी पड़ेगी. So when there is a horizontal curve in addition to the gradient, this is what I have told you, there is increase in loss of tractive force. ठीक है, due to both curve as well as gradient. That is why we have to compensate the value of gradient. Please tell me if this much things are clear or not. यहां तक सब clear हुआ? Explanation is clear or not for this grade compensation? Doubt है तो बताइए. If it is clear, then also please let me know. If it is not, then please definitely tell me that you have doubt. इशादुल, आपको कोई डाउट है तो बताओ, पूछो मुझसे. शुभम, नानी, सतेश, कांतिका, समीक्षा, गुरप्रीत, बताइए फटाफट से बताइए. क्रिस्टल क्लियर और नॉट? क्लियर तो सब कर रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी. क्लियर, परफेक्ट, ठीक है. सो दिस मच थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. मतलब ज्ञान की बातें आपको पता चल चुकी हैं. स्टोरी इज डन, राइट? स्टोरी इज डन, राइट? Okay, difference between I have a question here from Satish. Different between super elevation and grade compensation. When we are discussing super elevation, right, so there is no horizontal, there is no vertical, there is no gradient on that road. Okay, we are talking about horizontal surface, right? When both the things are there on the road, at that time we have to provide super elevation is separate thing. Super elevation value we are not going to compensate. We will not compensate the value of super elevation. Whenever we have a gradient, we will, along with the horizontal curve, we will compensate the value of gradient only. ठीक है, सुपर एलिवेशन के साथ कभी नहीं खेलना, ठीक है, बहुत गलत चीज है वो, उसके साथ कभी नहीं खेलना हमें, इस तरह से आप याद रख सकते हो. बट जो आपका ग्रेड कॉम्पनसेशन होगा, जो आपका ग्रेडियंट है, यू कैन कॉम्पनसेट दैट ग्रेडियंट. ओके, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. सुपर एलिवेशन के साथ अगर आप ज्यादा खेल गए तो आप जाओगे सीधा पहाड़ से नीचे, ठीक है, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं होता. ओके, आई होप इट इज क्लियर. सो ग्रेड कॉम्पनसेशन वी हैव टू सी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैथमेटिकल टर्म. ये सब तो दीज वर द थियोरेटिकल पार्ट. आई होप इट इज क्लियर. सो ग्रेड कॉम्पनसेशन, राइट, ग्रेड कॉम्पनसेशन is equals to 30 plus r by r, 75 by r. So IRC has given you two formulas. One is 30 plus r by r and 75 by r. By both the calculation you will get the value. ठीक है, both the calculation you will get two values. One value will come from here, second value will come from here, right? So you have to consider the value whichever is minimum. ठीक है, जो भी minimum value हो उसको consider कर लेना. Okay, and now you have the value of grade compensation. Now what you need the value of compensated grade. तो compensated grade को अगर मैं लिखता हूं CG, compensated grade is CG, then I can say कि whatever the gradient is there on my road, gradient जो दिया था road पे, minus this grade compensation. This is, I'm writing it as GC, लिखा भी हुआ है, ठीक है. So by this manner you will get the value of compensated grade. अब मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन इस चीज में? ग्रेड कॉम्पनसेशन एंड कॉम्पनसेटेड ग्रेड. इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स, प्लीज आस्क मी. इफ इट इज क्लियर देन परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट रहेगा. पूछिए.
एनीवन डाउट? पूछो पूछो, डाउट पूछो फटाफट से। परफेक्ट है, ठीक है, तो ये क्लियर है। उसके बाद आता है, ये थी बॉडी ऑफ द ग्रेड कॉम्पनसेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोल ऑफ द ग्रेड कॉम्पनसेशन, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द सोल ऑफ द ग्रेड कॉम्पनसेशन। ये तक तो, यहां तक तो ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मजा नहीं आएगा, राइट? छोटा सा एक ट्विस्ट आएगा इसमें। क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू आईआरसी, अकॉर्डिंग टू आईआरसी मिनिमम कॉम्पनसेटेड ग्रेड should be 4%. Minimum compensated grade, this value should be 4%. If in the question your value is coming less than 4%, then you have to write your answer as 4% only. If your answer is 3.5, then it is wrong. You will write 4% as your right answer. If it is coming 3.9, wrong, you will write as 4%. If it is coming 4.1%, then 4.1% is perfectly correct. उस time you don't have to take the value as 4%. ठीक है? All right. Repeat. क्या repeat करना है दोस्त? Grade compensation का फॉर्मूला ये है 30 plus r by r. r here is the radius of curve. ठीक है? And compensated grade is what? तो ये तो होगा कि कितना कम करना है। अब gradient कम करने के बाद कितना हो गया? That is your compensated grade. ओके अच्छा, एक बार समझा देता हूं आपको मैं, दैट विल बी बेटर। सो सपोज आई हैड अ ग्रेडियंट, ठीक है, कोई भी ग्रेडियंट था, लेट सपोज कुछ भी था, एक्स कह लेते हैं, से फॉर एग्जांपल, राइट? दिस इज द ग्रेडियंट नाउ, ओके, एंड दिस हियर आल्सो आई हैव अ हॉरिजॉन्टल कर्व, सो आई हैव टू कॉम्पनसेट द ग्रेडियंट वैल्यू। ये जो वैल्यू है मेरे पास, इसको मुझे कम करना पड़ेगा। आई हैव टू कॉम्पनसेट दिस वैल्यू, राइट? सो हाउ आई विल कॉम्पनसेट? फर्स्टली आई नीड कि कितना कम करना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। कम करना है, दैट इज क्लियर, ओके, बिकॉज देयर इज अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑल्सो। सो आई हैव टू रिड्यूस दिस वैल्यू एंड आई हैव टू गेट द कॉम्पनसेटेड ग्रेड वैल्यू। बट कितना? ओके, हाउ मच वैल्यू आई हैव टू सब्ट्रैक्ट? सो दैट इज योर ग्रेड कॉम्पनसेशन GC, and the value you can get by 30 plus R by R or 75 by R. Take minimum value, दोनों में से जो भी मिनिमम हो वो ले लो। अब whatever the value of this grade compensation you have got, so this is the value which you have to reduce. Reduce from which? Reduce from gradient. So your compensated grade is how much? Whatever the gradient you had minus the grade compensation. अब पूछो जी, कोई डाउट है तो बताओ। If you have doubt, please ask me. If you don't have any doubt, please like the video. बताइए। Anyone? Any kind of doubt? We'll solve a question also. ठीक है, एक क्वेश्चन भी करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बताओ। डाउट्स? ऑल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर, राइट? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन सी व्हाट द वैल्यू वी आर गेटिंग। सो दिस इज, वी हैव सीन इट, दैट compensated grade is equals to gradient minus grade compensation. And what is the value of this grade compensation? 30 plus R by R या फिर 75 by R, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो ले लेना है, ठीक है? And according to IRC, compensation should not be provided for gradient flatter than 4%, or you can say कि minimum compensated grade is 4%, ठीक है? ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू है 4%। इससे कम अगर आती है क्वेश्चन में, आपका आंसर अगर इससे कम आता है तो यू हैव टू टेक 4% ओनली, ठीक है? 4% आपका सही आंसर होगा। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी क्विकली, यू डोंट हैव मच टाइम। फटाफट से इसको सॉल्व करो। सतीश, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन यू विल गेट द आइडिया।
What will be the compensated gradient for a horizontal curve of radius 60 meter if ruling gradient is 6%? Answers quickly. The value of radius of curve is given as 60 meter, right? Gradient is given as 6%. Right? कितना आ रहा है 4.75. अच्छा, let me just solve the question and you do one thing, you just give me the value of some equations which I need here. Alright, so let's suppose मैं अपना कैलकुलेटर भूल गया हूँ आज, ठीक है, ये इमेजिन करते हैं. ऑलराइट, और अब आप मुझे आंसर्स दोगे इन चीज़ों के. सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई नीड इज ग्रेड कॉम्पनसेशन. हाउ मच? 30 प्लस r बाय r या फिर 75 बाय r. ठीक है, सो दिस इज 30 प्लस r वैल्यूज हाउ मच? 60 दी हुई है, डिवाइड बाय 60. प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस फिगर. सतीश आप बताओ मुझे इसका वैल्यू का फिगर क्या होगा. और यू कैन से 90 बाई 60 कितना हुआ? 90 बाई 60 कितना हुआ? ओके, 1.5 इज दिस एंड फॉर दिस वन इज हाउ मच? 1.25, राइट. What I said to you, what was the condition here? That you have to take the minimum value. ठीक है, मिनिमम वैल्यू लेना था. इरशाद बोल वेरी गुड, जस्ट वेट फॉर एवरीवन. ठीक है, राइट. तो मिनिमम वैल्यू लेनी है. मिनिमम वैल्यू इज हाउ मच? 1.25, राइट. तो 1.25 अब आ गया है मेरे पास क्या? grade compensation. Now what is the value of compensated grade? This is what I need, right? Compensated grade is how much? Gradient minus grade compensation. How much is the gradient? 6%. And how much is the grade compensation? Minimum value I will take 1.25%, minus कर दिया तो इससे आ जाएगा 4.75%. Is it correct? इतना ही आया सबका. So this will be your answer. ठीक है. If you have any doubt in this solution, please ask me. Right? चलो. If it is clear, please tell me. अगर डाउट है तो पूछो. क्लियर है तो बताओ. परफेक्ट. चलो, बहुत अच्छा. Nice. Let's do one thing. Let's rearrange or let's replace some datas. Okay, यहाँ तक तो clear था. Now let's suppose this is not 6%. Suppose this is now 5%. Now please solve the question and please give me the answer, each one of you. Crystal clear? बहुत अच्छे. Now solve this question. The question, this question is now new question. Why? Because radius here is 60 meter as it was before only. ठीक है, but now the gradient value, your gradient value is 5%. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए. The question is same but the value is little bit changed. ठीक है, what will be the compensated gradient for a horizontal curve of radius 60 meter if the ruling gradient is 5%. कह दो, कमेंट में आग लगा दो, बता दो एक बार में सबको. गुड. साहिल बेटा वही गलती कर रहे हो आप जो मैंने आपको बताया अभी. मिनिमम वैल्यू इज 4%. ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो आईआरसी ने बोला है वो 4% है.
तो अब 4% अगर वैल्यू मिनिमम है, उससे कम अगर आपका 4%, ठीक है। हाउ वी गॉट दिस, लेट मी, टी इज 1.5 एंड 75 बाय 60 इज 1.25, ठीक है। वी हैव टू टेक मिनिमम, तो मिनिमम मैंने ले लिया है 1.25, ठीक है, क्योंकि मिनिमम यही था। सो कॉम्पनसेटेड ग्रेड is equals to gradient minus the grade compensation. So grade is how much, 5%, sorry, minus 1.25%, it is coming 3.75%, and if it was a MCQ, then 3.75 must be your A option. So most of the student will do A option as the correct option, but it is not correct because the minimum compensated grade by IRC is given as 4%. That is why if you are getting the value less than 4%, then you have to write 4% as your right answer. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? Is it clear? गुरप्रीत, बाकी लोग सब, साहिल, सेट है? चलो, नाउ नया क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स टेक अ न्यू क्वेश्चन नाउ, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ न्यू क्वेश्चन। परफेक्ट, चलो बहुत अच्छे। ओके ओके ओके, नया क्वेश्चन लेते हैं, राइट, परफेक्ट। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट विल बी, इधर क्या है वो बताता हूं, बट लेट्स टेक द रूलिंग ग्रेडियंट एज इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। सो लेट्स टेक इट एज 4%, ठीक है। व्हाट विल बी द ग्रेड कॉम्पनसेशन for a horizontal curve of radius 60 meter if the ruling gradient is 4%? Answers quickly. I give you 5 to 6 seconds, ठीक है। 5 से 6 सेकंड का आंसर है इसका, आप बता दो आप। What will be the grade compensation for a horizontal curve of radius 60 meter if the ruling gradient is 4%? सिर्फ 5 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि 3 सेकंड की कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। बाकी आपको लिखने में टाइम नहीं लगेगा। बच्चे फंसते नजर आ रहे हैं मुझे अब, ट्रिक जो भी इस क्वेश्चन की ट्रिक थी उसमें। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं, ऑप्शन, 2 ऑप्शन नहीं देने साहिल, एक आंसर दो आप। ओके, ठीक है। अच्छा, सो बिल्कुल सही है। यू पीपल आर सेइंग कि 1.25, राइट, ठीक है, राइट, क्योंकि अच्छा 2.75 का भी एक नया ऑप्शन आया है। हसन क्या कर रहे हो आप? चलो अच्छा है, तो अब लड़ाई है 2 ऑप्शंस में, 2.75 में या 1.25 में, इन दोनों के बीच कोई एक जीतेगा आज, राइट। चलो, और कोई, किसी के पास और कोई आंसर है इसके अलावा? 1.25 की जनता काफी है, तो हम लोग मान सकते हैं कि 1.25 सही आंसर होना चाहिए। ओके, तो आप जिसने भी 2.75 बोला, ठीक है, द स्टूडेंट हु सेड 2.75, थैंक यू सो मच, बिकॉज योर आंसर इज परफेक्टली रॉन्ग, ठीक है, आपका तो गलत है, सही है। अच्छा, 4 की भी वो आई है, 4 वाले तो बेटा आप बिल्कुल ही गलत हो, ठीक है, सही। तो अब आपका सही आंसर क्या हुआ? सही आंसर आपका 1.25 भी नहीं है, तो आप लोग भी खुश मत होइए, ठीक है। किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है, दोनों ही आंसर गलत थे, ठीक है, दोनों ही आंसर गलत है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, एक बार लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चन अगेन।
what will be the grade compensation. तो पहली चीज, the very first thing is they are not asking compensated grade, they are asking grade compensation. ठीक है. For a horizontal curve of radius 60 meter if the ruling gradient is 4%. अगर मेरा ruling gradient 4% है, if the ruling gradient is 4%, और IRC ने कहा था मुझे, IRC said this thing to me that 4% should be the minimum gradient, तो ग्रेड कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए, कितना वैल्यू मैं माइनस कर दूं इसमें से. अब आंसर दो. मैं आंसर नहीं बताया हूं अभी भी. आई डिड नॉट, आई एम नॉट टेलिंग यू द राइट, आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर, बट आई होप यू हैव गॉट द आंसर. प्लीज आप मुझे अब लिख दो कमेंट सेक्शन में कि कितना होगा आंसर इसका. 1 मार्क क्वेश्चन आराम से बनेगा ये गेट का, इजीली, क्योंकि आई थिंक कितने बच्चों ने, अगर 10 बच्चों ने भी आंसर दिया है तो 10 ने 10 गलत दिया है. गुड साहिल, समीक्षा, ओके. साहिल ने पहले सोचा सही था बट थोड़ा सा बीच में अटक गया था. नो ग्रेड कॉम्पनसेशन नीडेड, बिल्कुल सही बात है. नो ग्रेड कॉम्पनसेशन नीडेड बिकॉज इट इज ऑलरेडी एट इट्स मिनिमम वैल्यू. वो पहले से ही 4% है, उसको कम क्यों करेंगे हम. ठीक है, क्लियर, समझ आया. I hope this is clear now. Yes, no need to provide grade compensation. So the value of grade compensation is 0. The answer is 0. ठीक है, मजा आया, मुझे तो बहुत आया. गुड, वेरी गुड. चलो, नाउ यू पीपल नो दिस थिंग दैट ऐसा भी कुछ होता है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, एक बार और थोड़ा सा मजा लेते हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट डू वन मोर थिंग. एक क्वेश्चन और बनाते हैं, राइट. अगेन लेट्स टेक इट एज 5%. एक बार कंफर्म तो कर लूं सबको समझ आया कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर जो लिख रहा है. व्हाट विल बी द ग्रेड कॉम्पनसेशन for a horizontal curve of radius 60 meter if the ruling grade compensation and compensated grade. ठीक है, if the ruling gradient is 5%. come on. अब एक भी बच्चा कोई गलत करा, सो आई विल कंसीडर कि सब ने गलत किया. ठीक है, यू पीपल आर लाइक अ टीम एंड आई एम इन अ डिफरेंट टीम, राइट. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज दैट गेम वेयर आई कैन गिव यू क्वेश्चंस. ओके, सो यू पीपल आर इन अ टीम नाउ, सो प्लीज गिव मी आंसर, और सोच समझ के, मिल बांट के, मिलजुल के आप आंसर करोगे इसका. What will be the grade compensation and compensated grade for a horizontal curve of radius 60 meter if the ruling gradient is 5%? साहिल, जल्दबाजी में नहीं, आंसर करो मुझे तुरंत से. Please take your time. I am not giving you any time duration, so please give me the right answer this time. सोचो, समझो, and then give the answer. It is very simple, very easy. Whatever we have discussed till now, that you have to use. अच्छा, तो people who are saying 0, तो पहले तो मुझे ये बताओ क्यों 0, why 0? गुरप्रीत, नानी, साहिल, why 0? 0 क्यों? Now you will give me answers. ठीक है, I'll tell you your concepts only. Why 0? People who are saying 0, why 0? पहले 0 क्यों किया था? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी. It was already at its minimum value. But why this time 0? समीक्षा, एक आंसर सही है, दूसरा गलत है. समीक्षा, just imagine, just think about this. If you will give grade compensation of 1.25,
then how you will get the value of compensated grade as 4%. अच्छा, अब मुझे रेस्क्यू पे उतरना पड़ेगा, राइट? नहीं इरशाद, अच्छा ठीक है. सो दिस वाज द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. लेट्स सी हियर, लेट्स सी. एक टाइम दो मुझे, ठीक है, एक चीज दो मुझे, राइट? शो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट. आई विल नॉट शो यू, सॉरी. ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दीजिए. जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उसके बाद मुझसे पूछिए जो भी आपका पूछना है. अच्छा ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट नाउ. जस्ट अब मैं बोलता हूं, प्लीज जस्ट सी द सोल्यूशन व्हाट आई एम डूइंग, एंड आफ्टर दैट आई विल आस्क यू. इफ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू विल आस्क मी. ठीक है गुरप्रीत, अब आप सही जगह पहुंचे हो ना, वेरी गुड. चलो सी हियर, लेट्स गेट द वैल्यू. ठीक है, वन बाय वन वी विल डू, वन बाय वन. So what is the grade compensation? First let me see that. Grade compensation from here 30 plus 60 by 60 and 75 by 60. This is 1.5. This is 1.25. This is minimum value which I have to take. So 1.25 I will take. Now compensated grade is equals to what is the given gradient 5% minus what is the minimum value 1.25%. And if I will say the value I am getting is 3.75%, but it is less than 4%. It should not be less than 4%. So my answer for compensated grade is 4%. And to get this much of compensated grade and to get this much of compensated grade, how much amount of compensation I have to subtract out of this gradient? 1%. 1%. So grade compensation is 1%. जब 5% में से 1% you will subtract, then only you will get 4%. ठीक है, right? If it is clear, then please let me know. If you still have any doubt, then you can ask me. अब समझ आया? इरशादुल, नानी, गुरप्रीत, अब समझे आप? जिसको भी डाउट था या जो भी गलत आंसर दे रहे थे. राइट? So I hope now it is clear why 4% and then 1%. It is just imagine, just use your common sense also. We can use that. See here, I had the value as 5%. It was given to me 5%, right? As soon as I saw that my grade compensation, if I'm subtracting that from my gradient, I am getting value less than 4%. So IRC said that 4% should be the minimum value. So I will consider 4% as my right answer. Since I am getting my compensated grade as 4%, so how much grade compensation I have to give? I have to give 5 minus 4, which is 1. क्लियर है? ओके, गॉट इट. नाउ पेपर में आया होता तो नेगेटिव होता. नेगेटिव भी कितनी बार होता? आई हैव गिवन यू 4 क्वेश्चंस, जिसमें से ओनली 1 क्वेश्चन के लिए आपने सही आंसर दिया और 3 क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दिया. सो जस्ट इमेजिन यू मस्ट हैव लॉस्ट लाइक 3 क्वेश्चन यू मस्ट हैव गिवन द नेगेटिव मार्किंग. यू मस्ट हैव गॉट द नेगेटिव मार्किंग. एंड दिस क्वेश्चन वॉज सो सिंपल, इट वॉज लुकिंग लाइक इट इज वेरी सिंपल, और यहाँ पे आप गलती कर जाते. बट एज सुन एज आई जस्ट गिव यू डायरेक्शन, मैंने पूरा समझाया भी नहीं, कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी. एज सुन एज आई गिव यू द डायरेक्शन, you gave me the right answer. So this is the beauty of this type of concepts. ठीक है, तो उस टाइम आपको ध्यान देना है वहां पे कैसे करना है. और प्लीज रिमेंबर, whatever answer you gave me right here, all those answers will be present, all those wrong answers will be present in your options. If you will see SSC, ESE और GATE एग्जाम, तीनों ही एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. एंड whatever the wrong value you will get, that value will be present as your option. मजा आया क्या? बताइए. 1% कैसे आया तुलेंद्र? बिकॉज
when I saw that my compensated value is coming 3.75%, but I knew that it should not be less than 4%. So 4% become my answer. So I can only compensate it up to 4%. ठीक है, 4% तक मैं ला सकता हूँ. अब 5% से, because I had 5% as my gradient, 4% लाने के लिए हाउ मच ग्रेड कॉम्पनसेशन आई हैव टू प्रोवाइड, कितना ग्रेड कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा वैल्यू, 1% वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, तब मेरे को 5 से 4% पे आऊंगा. दैट इज वाई 1%. Perfect. So I hope now you don't have any kind of doubt in grade compensation. If any kind of question will come in the examination hall, you will not make any type of mistake, because concept will remain same, concept will not change, and the concept is simple also. It is very simple. If you will just look and try to see what I gave you, if you will look properly what I said, I have only said this one thing, only 3 things are important here. सिर्फ 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है. ग्रेड कॉम्पनसेशन होता है 30 प्लस आर बाय आर या फिर 75 बाय आर. ऑलराइट, दीज 2 वैल्यूज मिनिमम you have to consider. Compensated grade will be grade whatever the gradient is there minus the grade compensation, and grade, your compensated grade minimum value is 4% as per IRC. Only these 3 things are important to, or important what, nothing like important भी नहीं, सिर्फ यही 3 चीजें हैं ग्रेड कॉम्पनसेशन में जिससे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, सही है, सब सेट है. प्लीज टेल मी इफ इट इज क्लियर और नॉट. तुलेंद्र समझ आया आपको? Have you got the idea now that how 1% कैसे आया 1%? All right. So टाइम का पता ही नहीं चला, आज मज़ेदार कॉन्सेप्ट था. बिकॉज so 10:30, almost 10:30 is there. So rest topics I will cover tomorrow. Tomorrow I will be covering 2 topics, right? Hi देवशीष, बहुत ज़्यादा लेट आए हो आप. I will cover 2 topics tomorrow, summit curve and valley curve. So please be here tomorrow or Monday maybe, जो भी working day होगा, because I am working from home, so there is no free time for me. It is like office only. ठीक है. So next topic that I had to discuss was summit curve, but I don't have time. I have another class also. I don't have another class, but it was like this only. ठीक है. Tomorrow it's Saturday Sunday I don't have any class of startup. ठीक है, startup की कोई class नहीं होगी. Okay, and so alright, these concepts I will give you Monday. On Monday I will discuss this. Okay, so Vision 2021 is a course in which we are going to give you the whole syllabus of GATE and ESE, technical and non-technical. We will provide you live classes. Live classes will be there. If in case you are not able to see the live class of any day, you can watch the recorded session also, or you can download the video later on. Okay, also we will provide you study notes, quizzes, class test, all right, and conventional assignments. Each and everything will be provided to you, right? And these are the scholarships that you can get. 50% scholarship you can get if you have qualified GATE in 17, 18, 19 or 20, or IITN. If you are IITN, NITN or any other government college if you are studying from, then you can get this 50% discount on your MRP. And if you have qualified prelims, then also you can take this scholarship. You can call on these number, or you can mail on these email IDs to get the information for this particular course. All right, so thank you so much for being such a nice audience. Please do not forget to like this video before going. All right, and what you have to do, you just have to maintain the social distancing, and you have to stay at home only, because if you will stay at home, you will stay healthy. Okay, because so many cases are there. Okay, coming out exponentially. Everything is increasing every day, exponentially it is increasing. Please try to imagine the condition of these countries. China is almost right now, like, okay, ठीक है, America is now the
having the most number of cases, more than 85,000. Then Italy, Spain, not even the bureaucrats are safe there. Okay, सबके सब. Okay, everyone is facing these problems, and all these countries are too much advanced in medical facility. Then also they are not able to fight it. They are not able to control this disease. But we can control it if we can take those steps which they took काफी time बाद. Like, okay, so what is that step? Just stay at your home. Do not go anywhere outside until it is very, very urgent. Okay, perfect. So you can just share this information with your friends also, right? All right, so you can follow me on Gradeup app. Gradeup app is your own app. You can use it for free job notification. Lot of free content is available. We are going to launch one mains series also for free. We are going to launch one gate series for free, whose name will be Concept on Fingertips. That is not gate specified. It is for gate also, ESE also, SSC also, because we are going to cover the topics, topic wise hoga usme, right? So my name is Joshit Singh, and you can follow me on Gradeup app or any other social media network like Instagram or Facebook. It's your choice, right? In this period of lockdown, I'll be available for you anytime. Okay, so thank you so much. What you have to do till then, you have to prep smart, stay safe, and go grade up. Thank you so much. Good night, everyone.